Vale. A sage once told that the immortal thing on the earth is human emotions and feelings are connected to the nature. When I visited the people on Vale, I came to a conclusion that the immortality for them is given by these people. The innocence in their lives is as fresh as a baby came out of the womb. They didn't study the art of asking, but they mastered the art of giving. The art of giving, their affection, love, and caring reflects that they are the actual kings. While it came to hospitality, when I asked about the roads and facilities, the moving answer they have given was, "We are nothing but a number to ayyagarlu," which actually mean the authorities. But they never complain to anyone and says, "Unlike you, all we are safely in the lap of Mother, that is, earth and nature." जीवना कमतो तुम्हारा आया बार बोले कमतो तेल बोला एमतार से जंगल खड़की करी खड़कीदारी जंगल खड़कबार डोंगरेर पथर खड़ीने बिकबार एमतार जेते लुंग एबे प्रभु तम हमके खायटा साकार हम देखे नहीं हमके चाहे छौकर हम खायटा नहीं एमतार से रोडल मोडल खाई करी. In these villages, mothers rely on the wisdom and guidance of their elders and the support of their families to bring their babies into the world. The lack of modern medical intervention means that childbirth is often a more challenging and a painful process, but it is also a transformative experience that deepens the bond between mother and child. एबे तुमके रोड आसे कि नहीं प्रभु तुम कोनल देखिले रोड नहीं काटा नहीं सब देखरि हम आरकु वेली फाइटा में बोय ने बिकी करी ठकार दा काई के आइले चिकन पानी के नि अंतलु एबे जोर दुखाइले कमत करी ने करला दुखाइले मिसा आस्पत्रि ते जाके आरकु वेली साला दूरम जिबा एबे बोय ने करलास के बांडी ते करलास बोय से नहीं तेलु बोय से नहीं तलु एबे एबे बोल आसे कि नहीं बोल नहीं बोल नहीं हमर जीवनार इमतार से काय बोलू तुमके खाइबा पानी बोल आसे कि नहीं खाइबा पानी कौन देखला कि प्रभु तुम The future generation with no hope on future living. The impetus for kids to venture outside is rooted in hope and anticipation, yet these children fixated solely on the first letter H, which resembles happiness. When children are deprived of opportunities to explore and play, they may begin to feel a sense of hopelessness and despair. When they are cut off from the natural world, unable to interact with other children or face other challenges, will limit their ability to engage with the world around them. When this happens, it can be difficult for children to experience the joy of childhood and the sense of wonder that comes by exploring new things. By helping children, they will find new ways to engage with the world and rediscover the sense of hope and enthusiasm for life. एबे अक्तुरु पथर मन खांदा मन दारू मन बिकी कैलास के त छेटा मन एबे नाही यार छेटा मन एबे बोले यार छेटा मन अक्तु माया गला जंगल पर मारी देला के सबे सारी गला एबे खाइटा नहीं एबे मकाम रोपी करी ओलब छेटा से ओलब दारू लगाइला पर एबे एबे खार डंगर के थाके आसे कि नहीं बिन डंगरे मिसे जाय दारू पथर काटा बिकी कैलास कि नहीं बिन डंगरे मिसे तानी बिकी खाइबा कोशिश करी साला दूर मिंडी जीवा का बात आ जातलु हां एबे तुम तले अक्तुर पर से जीवना बे अक्तुर पर से जीवना एबे खाइबा पानी नहीं रोड नहीं बांडी नहीं नीते खाइबा पानी नहीं रोड नहीं बोरिंग मारले बोरिंग ते सारी का पानी मिसा से नहीं बोरिंग में सेट करो तो नहीं बोरिंग में सेट करो नहीं खराट के बिलु बेट खाइटा खराट के बिलु मन बेटवा करे प्रयत्न हम करतलाई एबे गोरु बासी एबे कोनते नहीं करी गोरु बासी कोनते हम तार नहीं करी
ये मौका मन रोपी देबार साला बाद आय करी गोरमन के फायल पकाई देबार पानी देबार करी जड़ लगा कोई नहीं बुलाई कुआइतलु एबे मका रोपी खाय टाकते फसाइतलास मकाते मौका रोपी आरते कापी मासी मिरियाल मन गोला लोक मन कोइतला नोला लोक मन नाई कापी खाय टाकते लगा बिकी काइतलास ते कापी कर नेले बाबा असला खेजी मारी पकाइतला खेजी तारगु कोरी पाइतलाई एबे कोटा गेनितले सेटा कोड सावकार मन बोली गनी खमटी मन खमटी बोले कोन तम साकार मन खमटी मन बोले रे काय याने सुंकर मेटा कति आसन खमटी मनु कति आसन खमटी मन As I stand here in the midst of this lush green field, the sweet aroma of nature fills my senses, transporting me back to my childhood memories. The scent of freshly turned earth, the rustling of the leaves in the gentle breeze, and the chirping of birds all around me is a symphony of nature that soothes my soul and brings me a sense of peace that is hard to find in the modern world. For me, the aroma of nature and fields is not just a pleasant fragrance, but a connection to my land, to my roots, and to the future that I am helping to create. As a farmer who follows traditional agriculture methods, I find solace and inspiration in the beauty of the natural world and in the bountiful harvest that is the result of my labor. I remain committed to the values and the traditions that have been passed down through the generations. से मोले के जिले की अमर जीविका इति से बिल्कुल को আমো এবে তেলুগু না জানো আম খাতা শিখুং নাই আমকে আম ওড়িয়া খাতা সঙ্গে হইলে তেলুগুতে গেলে আমকে বুঝে নাই আমু के फांकी तो करे इति से माटी का মাটি কাই করি আমি ইতি आनी गोगो बोला জিটলু আনি গোগো বলো অনেকি দাদা আপা বলো নি জিটলু গানি আম কোলা বেবার কোলা দিনছু আমকে রেট নাই নেলাটা onda দুই onda দেলে খাইটার করব কোমত জীবন পিলাকে কোমত 5 টাকা দাম পাট পড়াইব পিলাকে বাটাল কোমত কেন দেব তাকে খাওনি কোমত পেট পুরাইব আমার জীব না আমার তো For them, the journey of pregnancy and childbirth is a sacred process that should be honored with tradition and ceremony rather than a medical intervention. As an observer of this beautiful bond between the mother and the child, I am struck by the resilience and determination of these women who continue to honor their traditions and beliefs in the face of modernization. लगाई बाबा से मिले ना दारू हम कुली जाते लोग मिल कर ना अब कुली गाला लोग मिल ला नोला लोग ना हम बात कर काटा कंसिन डाबो न दले आ काटा हम तो बात আমু খাইকে থমু খাইকে খাই খাই পাটা করিলাছেন আমার সে বলে পারলা বলে দান করতে লোক মান্ডিয়া করতে লোক সুয়া করতে লোক এবার কাটা পারলেছে কত মান্ডিয়া রকুরলু দুডালা ওইলা সেটা আমার বরস করতে এত পিলা জিলা খাইবা I recently had an opportunity to visit a village and was struck by the transportation facilities available there. Despite the availability of these carts, it is tough to travel miles on foot for basic necessities like food and supplies. Despite being in my early 20s, I cannot compete with the villagers in terms of their walking ability and their overall health. The fact that people in their late 60s were able to walk miles every day while I was struggling to keep up was a testament to their strength and resilience. I saw bullock carts being used to transport goods and people around the village, which was something I had only seen in the movies from late 90s.
खराट खेजी मारी दिटला की खराट खेजी संग बिगितला सु तारा खेजी मारी पेटला तार खेजी मारी पेटला ते तारा तारा मिसे मारी पेटला अब तारा जाना नाही एबे तुम खराट ना खाई ना जानला पैसे तेने कुमठी मन काय दिटला डाकू हमके ना जाना से ना राय तुल बोले तुम खाय आदिवासी पर लोग हमके मार्केट तारा जाना नाही तेलुगु कायटा जाना नाही तेलुगु ना जानले ओडिया ना जानले इंग्लिश ना साधु नाही के तुमके नहीं हमके साधु नाही I had the privilege of visiting a rural area that was truly immersed in nature. During my visit, I came across a small hut-like home where I was warmly welcomed by a family residing there. As we conversed, I asked how many members were living in this hut. To my amazement, they didn't limit their definition of family to just human beings, but they have included their beloved pet animals like cows, buffaloes, and hens in the count, highlighting their deep reverence for nature and all its inhabitants. Witnessing this bond between the family and their animals was truly remarkable. काय बात को सोलो नाही বাদ কো নাই খাং বলে গেঞ্জি নাই এবে খুদ গেনি আনি গেঞ্জি করি কাটলো নইলা দিনে ডাবু 5 টাকা রইলা দিনে গেনি আনি বাজারে যাই কোন কটুতে গেনি আনি গেঞ্জি করি কাটলো নইলা দিনে বুকে মিশা রই যায় আমানি কাটলো কোন দে ভাই এটা আছে আমার জীবনার কাইটা I recently had a fascinating encounter with a couple who were making clay toys of small children. I was curious about their craft and asked them about the story behind it. To my surprise, they shared that they had a deep belief that these clay toys had the power to ward off bad spiritual practices that could be affecting their children at their home. According to the tradition, they would make clay toy prototypes of the children and then worship these clay idols. अरे रे हमारी पार्टी को लग मिलता ना पार्लर काट करो अरे बे खाई के तुम खाई काटा कर खाई के आटे केनता नाही बिगितला आटे खाई काटा आर नेट लू अरे एबे काटा कोट लू ते खाई दारू नेट लू की पतर नेट लू ए आटे पोसक फसलाटा करे আরে নেলা আমাকে দিও গেনলে আমার কাইটা कैरेट कोले नो गेनले গেনলে हैं আমনে मुलांगी कोले नो गेनले দলে কাটে আমনে खाई के पानी ना भाई पानी संगी गाले बड़ी सारजी होइतरले হইতেছে সাবিসে ওন্দা হই যায় ओइटला अरे खाई सामान गेनियन সামান টাকা 2 টাকা গেনলে আমি কাটে সার্জি করব কাটে লোন মরিচ করব করছো खाइडा और अनेक बड़े गुलसी आराम के পিলা জিলাকে কমা দেখবো हम तो गले गुडे लगा पिलार लोग कौन पिला पार्टी करो तो नहीं I recently spent a night in a village, and the experience left me feeling introspective and contemplative. As the night drew in, I began to feel a sense of unease, accustomed as I was into constant stimulation of mobile phones and other electronic gadgets. However, as I sat with the villagers and watched them gathering around a fireplace to share food and conversation, I was struck by the simple beauty of their way of life. Despite the lack of modern technology, these people were still able to connect with one another, sharing stories, laughter, and companionship. In that moment, I felt like a cherry on top of a cake, experiencing the joy and contentment that was truly unparalleled. तेरे मिलते रला ए बना परला बोले बसी फोड़लू खाइटा आर मिलसी नाही बोला रे तुम खाई के खेमत कर जीतलास नाही खाई के पंटा पासा जीतलास की दारू बिगी जीतलास की पतर बिगी जीतलास की बोल बड़ा दारू पोतर आर बोई परले बिकबुं किया बोई परबार बोले दारू आनी खाई के दारू बोई आनी लूं यूट्यूबर तो नाही बोलबा परत को बोई परले से बोल नाही बोई अनला तो खाइटा तिना रेट गिफ्ट कोई नहीं बोल को ए लगाई बाबा से मिले ना दारू हम कुली जाते लोग मिलते रला ए कुली गाल
গালা লোক মিলিটলা নইলা লোক নাই আমার কাজ কর খাইটা পেনশন ডাবো ন দিলে In conclusion, my experience in the village was truly enlightening, and I'm grateful to have the opportunity to witness their way of life. What struck me the most was their hospitality and their willingness to treat me as one among them. They took care of my needs and regularly asked about my well-being, and I was humbled by their generosity and kindness. I questioned myself why we are not more like them in the modern world, where uninvited guests are often felt as a nuisance rather than an opportunity to connect and learn each other. One of the most important things I learned from the villagers was their approach to life. They didn't possess a strong desire for material possessions or status symbols. Instead, their focus was on the basics of life: eat, sleep, work. This simple philosophy left a deep impression on me and made me realize that perhaps the key of true happiness lies in simplicity and contentment rather than the endless pursuit of material possessions.